Hi students and teachers, Amit Aura from EcoVisionaire. I hope you have completed demand and elasticity of demand. So we'll start with Unit 3 now. Unit 3 usually starts with production, but as demand is related to supply, I am starting supply first. So we'll be understanding about supply now. And student, one point you have to remember that when you're doing demand, you have to think as a customer, as a consumer, your thinking has to come from demand side. So it is consumer more, but when you do supply, you are not a consumer. You will think from the perspective of a supplier, of a manufacturer, of a producer. तो आपने सोचना है एज अ प्रोड्यूसर नॉट एज अ कंज्यूमर. तो पूरा सप्लाई इजीली समझ आ जाएगा. ऑन द सेम, बिल्कुल सेम टॉपिक्स पे चलता है सप्लाई, इसीलिए हमने सप्लाई पहले स्टार्ट किया है. सो सप्लाई, एज यू ऑल नो, विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स नाउ. सप्लाई में हम लोग मीनिंग जानेंगे आज. विल अंडरस्टैंड लाइक वी डिड लॉ ऑफ demand. We'll also get to know what is law of supply, keeping other factors constant. As we did extension and contraction in demand, we'll be doing extension and contraction in supply. Then we will be doing factors affecting market supply, individual supply, as we did factors affecting demand. Everything is same. And then we'll do increase and decrease in supply, and the concepts are also same, the reasons are also same. Difference between change in quantity demanded we did there, and here we'll be doing supply. So जिन्होंने डिमांड पहले कर लिया, जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है डिमांड का पहले, वो वो सप्लाई बड़ी आराम से समझ जाएंगे. इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद supply and law of supply now. Supply means the quantity of a commodity that a firm is willing to sell. तो यहाँ आ गया था willingness to buy in demand. Here we have willingness to sell at a given price. कितना सामान आप बेचने को तैयार हो, कितना सामान आप मार्केट में लाने को तैयार हो at a given price during a period of time, that is known as supply. वेरी इजी. आप लालची, प्रोड्यूसर लालची होता है, तो लॉ बहुत इजी है. Law of supply states that there is a direct relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Other things remaining constant. बहुत easy है. Other things remaining constant. आप how will you react to increase in price? You are a supplier. Very easy. जब price ₹2 था, देखिए. So we were willing to supply 110 units of a commodity. When the price increased to ₹5, we are willing to supply more, that is 140. And when the price falls to ₹1, we are willing to supply only 100. So very easy law of supply, keeping other factors constant. प्राइस का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज देयर इज विलिंगनेस टू सप्लाई मोर. प्रोड्यूसर वांट्स मोर प्रॉफिट. सो व्हेन द प्राइस इज हाई, प्रोड्यूसर बिल्कुल लालची होता है, वो सेलर लालची होता है, वो सप्लाई ज़रूर बढ़ाएगा. व्हेन द प्राइस गोज अप एंड व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, of course producer will reduce the supply. So he will move from A to C when the price falls, and he will move from A to B when the price rises. So there is a direct relationship between price and of a commodity. अब बच्चों खुद ही इमेजिन करो कि अगर आप ही यू आर अ सप्लायर, और जिस चीज़ की सप्लाई आप मार्केट में कर रहे हो उस चीज़ के प्राइस मार्केट में इस समय कम है, तो यू वोंट लाइक टू सप्लाई अपने स्टॉक में से. स्टॉक इज़ डिफरेंट. स्टॉक कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, आप कम प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करना नहीं चाहेंगे. और जब प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू सप्लाई मोर, कि आपका मार्केट में ज़्यादा सामान बिक जाए इस समय एट अ हायर प्राइस, सो दैट यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट. So law of supply is very simple, just opposite of law of demand. More the price, more the supply, and less the price, less the supply, keeping other factors constant. So we'll understand extension and contraction also using this law of supply. Very easy. Extension बहुत easy है. Increase in the quantity supplied due to rise in price. जब price बढ़ता है from P to P1, सप्लायर को बड़ी खुशी होती है इस बात की. देन ही ट्राइज टू सप्लाई more quantity OQ2 OQ1 or dash, and on the curve it moves, the supply moves from on the same curve.
it moves from one point to the other, that is A to B. So that A to B is termed as extension in supply, as we did in demand. Demand में opposite था, we were coming down and we were saying as extension because less price, more demand. And when it is supply, moving from OP to OP dash or from point A to B shows extension. और वो हुई किसकी वजह से है? वो प्राइस बढ़ने की वजह से हुई। उसको ऑपोजिट आप समझ ही गए होंगे, उसका ऑपोजिट इज कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी when OP was the price, OQ quantity was supplied. When the price fell to OP dash 2, the supply came down from A to C. तो ऑन द सेम कर्व अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई कम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो इन कर्व के अंदर भी देख लीजिए आप, बड़ा इजी है. Moving from A to B is extension, whereas moving from A to C is contraction. और ये दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों कमोडिटी के अपने प्राइस की वजह से होते हैं. दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई. When the price falls, quantity supply falls. When the price rises, quantity supply rises. So that is the way extension and contraction takes place on the same curve. It happens, it is movement along the same curve. Contraction is downward movement along the same curve, whereas extension is upward movement along the same curve. ये तो प्राइस आ गया, ये प्राइस की वजह से होता है. बट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. फर्स्ट फैक्टर वी ऑलरेडी डन, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वेरी इजी बेटा. अब सप्लाई की बात करते हैं. मैंने कहा था आप सप्लाई करेंगे तो अपने आप को you will think as a supplier. You are a supplier, you supply things, you are a producer, you are a seller. So when the price of the commodity is high, it increases the supply. Of course, he wants to make more profit. The quantity supply will increase and vice versa. It will reduce with the decrease in price. चलिए यहाँ तक तो हो गया प्राइस फैक्टर. ये हमारा हो गया प्राइस फैक्टर. अब इससे नीचे जो भी फैक्टर्स होंगे वो अदर फैक्टर्स में आते हैं. अदर फैक्टर्स भी प्राइस के अलावा भी मेरी सप्लाई को और चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं. बिल्कुल कर सकती हैं. जैसे डिमांड को और चीज़ें अफेक्ट कर रही थी, वैसे सप्लाई को भी और चीज़ें अफेक्ट करती हैं. सो लेट अस सी द अदर फैक्टर्स. द फर्स्ट पॉइंट इन अदर फैक्टर इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. Students, I think you are all aware that with the modern technology, with the new technology, the cost of production comes down. The marginal cost of producing, marginal cost बहुत important है. Marginal cost is known as additional cost of producing a commodity. जितना additional cost कम होती जाएगी सामान को बनाने में, उतना हमारा profit margin बढ़ता जाएगा. सब जानते हैं, ये word हम बार बार यूज़ करेंगे. The more reduction in the marginal cost, more is the profit. So very easy. If the technology is new and new technology leads to less cost of production, if there is less cost of production, the profit margin increases. So very easy. When the new technology comes, the marginal cost goes down, the production capacity increases, the cost comes down, so therefore supply increases. So with new technology we can supply more now at a given price. हम और सप्लाई कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट कम हो गई है, इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है. इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. उल्टा भी होता है, अगर हम आउटडेटेड और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज माई मार्जिनल कॉस्ट. इफ इट इंक्रीजेज माई मार्जिनल कॉस्ट, माई सप्लाई गोज डाउन. पुरानी मशीन बार बार ब्रेक डाउन कर जाती है. सो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कोर्स on the same price, and new technology on the same price, there is increase in supply. So rightward shift in supply if new technology is adopted, and leftward shift in supply if obsolete technology is used for a longer time. So this is how the first factor other than price affects the supply. और आपको बता दूं बेटा, अदर फैक्टर्स कभी भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं. अदर फैक्टर्स इंक्रीज और डिक्रीज को लीड करते हैं. दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट. इफ इट इज फेवरेबल फॉर द सप्लाई, इट इज राइटवर्ड शिफ्ट, जस्ट लाइक डिमांड. इफ इट इज अनफेवरेबल, इट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सो फर्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू, राइटवर्ड शिफ्ट. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सेकेंड, प्राइस ऑफ इनपुट्स. तो बच्चों इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल, जो चीज़ें हम
उसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं, जो यूज़ अप होते हैं वो इनपुट्स होते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो बिजली हो, वो सब रॉ मटेरियल के अंदर ही आता है। सो अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड एज यू ऑल नो, if marginal cost of producing a commodity increases, the supply goes down, we are able to produce less, so the supply goes down, leftward shift. And if the raw material cost comes down, labor cost comes down, electricity charges come down, or you can say fuel cost comes down. So if the inputs cost goes down, the marginal cost goes down. If the marginal cost goes down, the supply increases at a given price. So therefore rightward shift. So very easy, अगर raw material, अगर आप एक raw material का example लेके चलो, so very easy way of understanding. If raw material becomes expensive, the profit margin goes down. So we are able to provide less, we are able to supply less because marginal cost increases. If raw material price goes down, our marginal cost falls. Therefore, there is a rightward shift in the supply. So more profits, more supply; less profit, less supply. Let us come to the third other factor than price, that is change in government taxes. For your information, the tax, सबसे बड़ा indirect tax आप जानते हो सारे बच्चे, is GST now, goods and service tax. It was excise duty previously. अभी भी कुछ चीज़ों पे excise duty बाकी है. But if excise duty or GST is increased on any production, बेसिकली जीएसटी प्रोडक्शन पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो अगर गुड्स के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड इंक्रीजेज, सो प्रॉफिट मार्जिन फॉल्स. सेम लॉ चल रहा है, जहाँ जहाँ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी किसी चीज़ को बनाने में, वहाँ वहाँ उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा. सो इफ जीएसटी और एनी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में द गवर्नमेंट इंक्रीजेज, द मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेज, द प्रॉफिट मार्जिन गोज डाउन, विद दैट द सप्लाई गोज डाउन. तो आप सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज कर देते हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन द सप्लाई. वेयर एज द टैक्स इज रिड्यूस्ड और सब्सिडी इज गिवन. सब्सिडी होता है फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू द कंपनीज टू encourage the production. So when subsidies is given, then cost of production for the firm comes down, marginal cost comes down, therefore they are able to produce more with the given money. If they are able to produce more with the given money, they'll be able to supply more now at a given price. So more is supplied, so rightward shift, that is increase. So government taxes का बढ़ना, leftward shift, government taxes का घटना, rightward. सब्सिडीज का बढ़ना, राइटवर्ड शिफ्ट. सब्सिडीज का कम होना इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. देन वी हैव द फोर्थ other factor and fifth point of factor, that is price of other goods. If a company is able to produce, a firm is able to produce multiple commodities or more than one commodity, then certainly this point is valid. If a company can produce bikes and scooters both, and the price of bike increases in the market, the production for bike, the attraction increases. Actually the company wants to produce the commodity whose price is high, so it is more attracted to produce bikes because bike का प्राइस मार्केट में बढ़ गया है. तो जिस चीज़ का मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, कंपनी की विलिंगनेस टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी बढ़ जाती है, तो वो रिसोर्सेज को उनसे निकाल के वो उन चीज़ों पे लगाता है. लाइक अभी कोरोना वायरस के, इफ़ यू हैव नोटिस्ड फ्यू डेज, आपने टीवी पे देखा होगा और जगह पे, अचानक सैनिटाइजर्स एंड मशीन्स, dispensing sanitizers and masks and PPE kits, these things have come in the market and their price is high in the market. So what companies are doing, they are moving the resources from the goods they were previously producing, and they have transferred the resources towards this as the profit margin is more. So when the price of other good increases, people start, suppliers start supplying, or you can say producer get attracted towards that commodity, he starts producing that. जब कुछ चीज़ महंगी हो जाती है, then
हमने तो यहाँ पे एग्जांपल लिया wheat and sugar cane का, दोनों बना रहे हैं, तो if the price of sugarcane increases, the land will be more used for sugarcane and the supply of sugarcane will increase. Similarly, right now medical equipment and ventilators and PPE kits, इनकी supply बढ़ेगी because market में इनका price high है और बाकी चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, and vice versa. So more the price of other good, more is the supply of that good, and less the supply of given good, leftward shift, and less more is the price of given good in the market, less is the price of other good in the market, more the supply of given good, rightward shift. Last point is a point of additional point of market supply. It does not justify the point to be of individual supply. So ये हम याद करेंगे, number of firms as market point. If number of firms in the market increase, अचानक मास्क बनाने वाली कंपनियां मार्केट में ज़्यादा आ गई हैं. So what has happened to the supply of mask at a given price? It has gone rightward. If number of firms increase in the market, rightward, and number of firms producing some other commodity may have fallen, so market supply goes leftward. So let us revise these 6 points of factors affecting supply. Price, as you all know, has a positive relation with the supply. More the price, more is the quantity supplied due to law of supply, and vice versa. Second is very easy. If the technology is new, the marginal cost is low, then rightward shift. If the technology is obsolete, marginal cost is high, leftward shift. And then we have price of inputs. If the price of inputs is raw material is high, then the marginal cost is high, the supply goes leftward. If the and if the price of raw material falls, then of course the supply increases, goes rightward. Next point is taxes. If the government indirect taxes like GST, it rises, increases, then the marginal cost of producing the commodity rises and the supply goes leftward, and vice versa. Other goods, when they become expensive, it becomes attractive to produce, so given good supply goes leftward. If other good becomes cheaper, then given good is produced more at the same price, so rightward shift. Number of firms in the market increase, increasing the market supply. If the number of firms decrease, decrease the market supply. So इन्हीं factors, price को छोड़ के, students, all these factors उन्हीं पे based है हमारा increase in supply and decrease in supply. It is totally different from extension and contraction, so understand it very carefully. When other factors are favorable for the supplier or for the supply of a commodity, जब दूसरे factors ज़्यादा favorable हो जाते हैं for the supplier to supply, certainly the of course the supply increases, and it is not shown by on the same curve. It is shown by rightward shift in the supply curve, that is termed as increase in supply, like increase in demand. So rise in the supply of a commodity due to favorable factors, then price moves the curve from S to S dash. तो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई. विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी द प्रोड्यूसर इज एबल टू सप्लाई मोर, सो ड्यू टू रॉ मटेरियल प्राइस गोइंग डाउन, सप्लाई इंक्रीजेस. ठीक है बेटा, और पूरा कर्व शिफ्ट हो गया. एंड सप्लाई का फॉल होना ड्यू टू अनफेवरेबल फैक्टर्स अदर देन प्राइस is decrease, of course, leftward shift. Let us take one example. GST increased, all technology becomes obsolete, or GST increased. If GST is increased, the marginal cost goes high, the profit margin goes down, therefore the supply reduces and the curve shifts from S to S dash 2 dash. So therefore leftward shift, this is shown as decrease in demand. अब decrease in demand और increase in demand का simple फंडा है, they happen due to other factors than price, and price remains same, and also they don't happen on the same curve. There is altogether a new demand, or in the demand it was a new demand curve,
In supply, it is a new supply curve. Increase has a curve on the right side, decrease has a curve on the left side. So let us do it combined now. Combined में इनको किस टर्म से बुलाते हैं? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को टर्म दी गई है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, और इसको दी गई है इंक्रीज और डिक्रीज को कहा गया है change in supply, or you can say shifting of the supply curve. So when change in quantity supply is due to given own price of the commodity, it is change in QS. When it is due to other factors, then it is change in supply. There is no shifting of any supply curve in the change in quantity supply. There is a shift of right or left in change in supply. So change in QD में भी ऐसा ही था बच्चों, if you remember, there was no change in the demand curve when it was change in QD, and there was a rightward or leftward shift in the demand curve when it was change in demand. So third point is very easy. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों किसके अंडर हैं? ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंडर हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज जो हमने अभी पढ़ा है दैट इज अंडर change in supply. We'll understand this using a diagram now. Very easy. Going from A to B and A to C is change in quantity supplied. It is happening due to increase in price of the commodity or decrease in price of commodity itself. Going up is extension on the same curve. Going down is contraction on the same curve. It happens due to change in price. Whereas going rightward is increase and going leftward is decrease, and the whole concept here is called change in supply, and it is happening due to other factors, not due to the own price. There is a new curve in change in supply, there is no new curve in change in quantity supplied. Price is the main motivating factor in change in quantity supplied, whereas other factors जो फैक्टर्स हैं वो है मेन जो लीड करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज को. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई टुडे, एंड इफ देयर आर मल्टी, एक्चुअली हमारे पास इस पैकेज के अंदर वी हैव 2 videos going parallel, so if you're not able to understand any point here, so we have one more subject expert, Mr. Kunal Dua, who is taking parallel classes. He's taking on the whiteboard, so please open his video and also watch same topic again taught by him. So if any point is missed out by me, then he'll be covering it, so I request you to watch his videos also, and also download, ask your friends and teachers, you ask your students to download EcoVisioner app. There we have now started putting practice papers and practice tests free of cost for students of all the subjects. We have business studies, political science, we have entrepreneurship and other subjects, English of course. We are also providing study material free of cost where nothing has to be paid. We have uploaded CBSE previous year board papers which can be downloaded. We have free videos of some difficult concepts already there, and if any child wants to buy app classes like this one, that are also available on our app. It can be bought directly from our app. Full year classes hai by experts, you can buy it from there. And lastly, if you want to get any information about our app or our EcoVisioner Olympiad or other books, you can contact on these numbers. Thank you students. Stay healthy and stay fit. God bless you.